अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब के चैनल में जिसका नाम है ZEE Techcare। गाइस, आज की वीडियो मेरे प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें मैं आपको इंटरनेट के रिमेनिंग कुछ यूजफुल वेबसाइट के बारे में बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे और साथ ही में नोटिफिकेशन आइकन इनेबल कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो से आप अलर्ट रह सके। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो वेबसाइट आता है वो है hackertyper.com। इस वेबसाइट की मदद से आप एक हैकर की तरह टाइपिंग कर सकते हैं। हालांकि ये टाइपिंग एक फेक कोडिंग होती है, लेकिन ये आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस साबित हो सकता है। कीबोर्ड पर कोई भी की प्रेस करने से आपके पास एक कोडिंग जनरेट होती है, जो कि आपको एक रियल हैकिंग टाइपिंग की तरह एक इंटरफेस शो कराता है। और सिंपली ऑल की प्रेस करने से आपको स्क्रीन पर एक एक्सेस डिनाइड का मैसेज दे देता है। ये मैसेज एक फेक मैसेज होता है, लेकिन ये आपको सिर्फ ये शो कराता है कि भाई आप जो हैकिंग कर रहे हैं उसमें आपको एक्सेस मिल गई। इसके बाद जो वेबसाइट है वो है camel.com। ये वेबसाइट उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है जो कि इंटरनेट पर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ये वेबसाइट आपके साथ ऑनलाइन शॉपिंग में इस तरह हेल्पफुल हो सकता है, अगर आप इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है तो ये आपके लिए सारे ऑनलाइन सेलिंग प्रोडक्ट्स ट्रैक करता है और इन फ्यूचर अगर उस प्रोडक्ट पर कोई सेल या उस प्रोडक्ट की प्राइस रिड्यूस होती है तो आपको ये नोटिफाई करता है। इसके बाद जो वेबसाइट आता है वो है thetypingcat.com। इस वेबसाइट की मदद से आप ऑनलाइन टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ ही में आप अपनी टाइपिंग स्पीड भी मालूम कर सकते हैं। इसके बाद जो वेबसाइट है वो है office.com। ये वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकती है। इस वेबसाइट की मदद से आप MS ऑफिस को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। इन केस आपको MS ऑफिस की ज़रूरत हो और आपके पास कंप्यूटर में इंस्टॉल ना हो तो आप इस वेबसाइट की मदद से MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी हो आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद जो वेबसाइट है वो है vtransfer.com। इस वेबसाइट की मदद से आप कोई भी फाइल और प्रोग्राम किसी दूसरे यूज़र को ऑनलाइन सेंड कर सकते हैं। और इस वेबसाइट की सबसे अच्छी खासियत ये है कि बिल्कुल सिक्योर है और आप मैक्सिमम 2 GB तक कोई भी फाइल सेंड कर सकते हैं।
इसके बाद जो वेबसाइट आती है वो है account-killer.com। ये वेबसाइट आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हो सकती है। इस वेबसाइट की मदद से आप किसी भी अकाउंट को डिलीट करने का फुल प्रोसीजर ले सकते हैं। फर्स्ट करें आपको एक अकाउंट डिलीट करना हो, फेसबुक, ट्विटर, जीमेल, जो भी अकाउंट आपने डिलीट करने हो और आपको प्रोसीजर नहीं पता, तो सिंपली account-killer.com पर सर्च करने से आप उस अकाउंट की डीएक्टिवेशन की फुल प्रोसीजर ले सकते हैं। इसके बाद जो वेबसाइट आती है वो है pdf2word.com। इस वेबसाइट की मदद से आप किसी भी पीडीएफ फॉर्म को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और कन्वर्जन के बाद उसमें आप खुद की मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद जो वेबसाइट है वो है tiny.cc। इसको आप यूआरएल शॉर्टर भी कह सकते हैं। इस वेबसाइट की मदद से आप किसी भी लॉन्ग यूआरएल को शॉर्ट यूआरएल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं एक यूआरएल को शॉर्ट करना चाहूँ तो सिंपली इस वेबसाइट की मदद ले सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।